Hello guys, welcome back to my channel. So today I'm making some resin jewelry. तो इसके लिए मैंने 3:1 का रेजिन लिया है, जिसके लिए मैंने ज्वेलरी बनाने के लिए 25 ग्राम रेजिन लिया है और इसका हम 3:1 में डिवाइड करेंगे। तो इसमें 8 ग्राम ऑफ हार्डनर मैंने यूज़ किया है, इसको अच्छे से मिक्स किया है। देन मैंने इसको डिवाइड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर अपनी ज्वेलरी को बनाने के लिए ग्रीन कलर का स्पार्कल यूज़ किया है। तो इस ग्रीन कलर के स्पार्कल को हमने अपने रेजिन लिक्विड में अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। देन मैंने अपना ये ज्वेलरी मोल्ड लिया है। ये इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी भी साइट पर, या फिर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने अपना जो मिक्सचर रेजिन का बनाया था, तो इसे उसमें पोर किया है अच्छे से। सेम यही लिक्विड हमने अपने रिंग मोल्ड के अंदर ऐड किया है। लिक्विड पोर करने के बाद हमने अपने रेजिन ज्वेलरी को क्योर होने के लिए रख दिया गया है। इसका क्यूरिंग टाइमिंग है 24 to 38 आवर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डे हम इसे डिमोल्ड करेंगे।